Okay, hello dear students. So in this video we are going to discuss about safety in automobile. ये भी चैप्टर है आपका. ओके, सब चैप्टर भी रह सकता है. सो वी विल डिस्कस दिस in this MCQs. Okay, देखो read करो question. By what percentage do seat belt reduce the risk of a death for a person sitting in front seat? So कितना percentage वो reduce करता है risk of death को? So it reduces by a humongous 50%. So that's why it is advised to us that wear seat belt while driving, right? No, so it saves around, it reduces the 50% of the risk. So आपका आंसर बी रहेगा. नेक्स्ट, वेयर डू टिपिकल कार सीट बेल्ट अप्लाई मोस्ट ऑफ द स्टॉपिंग फोर्स? ओके, सो इन विच पार्ट डज द सीट बेल्ट अप्लाई द स्टॉपिंग फोर्स? ओके, सो लेट अस सी दैट. ओके, सो आपका आंसर क्या रहना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? लेट अस चेक. टू द शोल्डर एंड हिप्स, टू द चेस्ट एंड एब्डोमिन, टू द रिब केज एंड पेल्विस. सो स्टॉपिंग फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा? टू द रिब केज एंड पेल्विस डियर स्टूडेंट्स. सो आपका आंसर रहेगा सी. नेक्स्ट, व्हाट एरिया ऑफ कार इज डिजाइन टू डिफॉर्म इन ए कोलिशन? दैट एरिया ऑफ कार इज नोन एज व्हाट? क्रम्पल जोन. Okay, the bonnet, the front side should crumple in an accident. So that zone is crumple zone. Next, what's the primary advantage of a anti-lock braking system? So सबसे उसका primary advantage है वो क्या है? They allow you to steer while braking. So your answer is C. Okay, next. Tempered safety glass is how many times stronger than regular glass? So see, it is 5 to 10 times stronger. That's why nowadays tempered safety glass is been preferred over your normal glass because it is 5 to 10 times stronger. Next, by what percentage can airbags reduce the risk of dying in a direct frontal crash? So देखिए स्टूडेंट, आपका आंसर 50% नहीं रहना चाहिए. इट इज परफेक्टली मेंशन फॉर ओनली डायरेक्ट फ्रंटल क्रैश. उसी के लिए हमें आंसर फाइंड करना है. सो उसी के लिए आंसर क्या रहेगा? 30% डियर स्टूडेंट्स. 50% इज फॉर डायरेक्ट साइड and from behind also. Okay, so that makes total 50%. What kind of gas inflates in an airbag? Okay, so कौन सा गैस इन्फ्लेट होता है एयरबैग में? दैट इज नाइट्रोजन डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, हाउ फार बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील शुड यू सिट to avoid injury from an inflated airbag? Okay, so from an inflated airbag, so कितना फार हम बैठना चाहिए? That is around 10 inches dear students. How many it is? 10 inches. Good. Next, what are the requirements for a child to sit in a forward facing child seat? Okay, so requirement क्या है child का? So he should at least weigh 20 pounds or more than 20 pounds के नीचे तो नहीं चलेगा. That is your basic requirement for a child to sit in your forward child seat. Okay, so आपका आंसर रहेगा D. When is a child ready to use an adult seat belt? चाइल्ड कब रेडी रहेगा टू यूज द एडल्ट सीट बेल्ट? वेर दे आर अराउंड 4 feet 9 inches टॉल. कम से कम उनका हाइट कितना रहना चाहिए? 4 feet 9 inch. ओके, सो देन एंड देन ओनली इट वुड द चाइल्ड वुड बी रेडी टू यूज एन एडल्ट सीट बेल्ट. नेक्स्ट, what does airbag used for safety of a car driven contains? Okay, so एयरबैग क्या कंटेंट रहता है? सोडियम एजाइड डियर स्टूडेंट्स. ओके, नाइट्रोजन भी रहता है गैस, बट सोडियम एजाइड इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. व्हाट ईयर डिड गवर्नमेंट मैंडेट ड्राइवर साइड एयरबैग्स? सो कब गवर्नमेंट मैंडेट किया साइड एयरबैग्स को? इन 1996 डियर स्टूडेंट्स. Okay, so we will see the next question here.
Cruise control is used in which vehicle? It is used in A, road vehicles, dear students. Next, adaptive cruise control is used to adjust. Yes, adaptive cruise control is used to adjust the speed. Okay, वो speed को control करता है dear student. It controls the speed of the vehicle. Adaptive cruise control system uses, yes, it uses laser sensor भी रहता है उसमें, radar sensor भी रहता है और एक कैमरा सेटअप भी रहता है. So आपका आंसर रहेगा A, all of the above. Next, autonomous cruise control are considered a level 1 car, dear students. उसे हम क्या बोलते हैं? Level 1 car. Dash introduced laser preview distance control. So it was introduced by Mitsubishi. Okay, it was introduced by whom? Which company? Mitsubishi. Great. Next, Toyota offered a dash cruise control. Toyota was the first automobile industries to provide which cruise control? Laser cruise control, dear student. Okay, आपका आंसर A रहेगा. What was based system do not detect and dark vehicle in adverse weather? It was your laser based system. This laser based system do not detect dark vehicle in adverse weather. Next, if the impulse response is absolutely integrate, then the system is absolutely stable. अगर समझो impulse response या total integrate रहेगा, then it would be absolutely what? Stable. Asymptotic stability is connected with a system which is not under the influence of input. Good. Next, if the root of characteristic equation has positive real part, then the system is, फिर से एक बार read करो, if the root of characteristic equation has a positive real part, the system is. So let's see the answer. The system is stable, it is unstable, it is marginally stable, or it is linear. So आपका आंसर रहना चाहिए, it is unstable. Good. Dash is a quantitative measure of how fair the transient die cut in the system. It is D, relative stability. Relative stability is a quantitative measure of how fair the transient die cut in the system. A controller essentially is it is a comparator. So control क्या रहेगा? Comparator रहेगा. So इसी तरह से इतने हम MCQs देखे हैं, but there are more MCQs and I will provide the PDF within 1 to 2 days. Okay, dear student. So until then, keep working hard. Thank you so much.